Hello and a very warm welcome to all our viewers. You're watching the Cricketnext YouTube channel. My name is Kanav Bali and I'm here with a very interesting discussion for you guys. India won a three-match T20I series against Sri Lanka just a few days back. Yesterday, India played the third T20I match of the series and they came back from an impossible situation. And what made that impossible situation possible for India? A big collapse from the Sri Lankan team. Now, all three matches had one thing in common, and that was a Sri Lankan collapse. And as you can see, the graphic on your screen, three T20Is were played, and the way Sri Lanka batted in all three T20Is was, they need to go back to the drawing board and think what they did in these three T20Is. I'll take you through the numbers first. We'll talk about the first T20I जो सबसे पहले खेला गया 30 रन पे 9 विकेट्स गवाई 6 ओवर्स में. At one point of time, Sri Lanka was 140 at the loss of 2 wickets, and they could only manage 170 at the end of the innings. Just 170, 140 for two से सीधा 170 तक ही पहुंची श्रीलंका, and that was the first collapse of the series. Second T20I, श्रीलंका was 130 for 3, और उनका आखिरी innings total was 161. They lost 7 wickets in 31 runs in just 5 overs. Another big collapse from the Sri Lankan side. And in the third T20I, which was played yesterday, a dead rubber, so to say. India had already sealed the series before this, but Sri Lanka was 110 for 2. 110 for 2, and they got all out. They finished their innings at the score of 137, just 27 runs more within 8 wickets. They lost 7 wickets, giving away in 22 runs in 4.2 overs. These three matches and the stats on your screen tells you what kind of a batting performance this Sri Lanka put up. As you can see, 30 रन में 9 विकेट्स खोई है 6 ओवर में पहले T20I में, 31 रन पे 7 विकेट्स खोई हैं 5 ओवर में सेकंड T20I में, और 22 रन पे 7 विकेट्स खोई हैं 4.2, मतलब 26 बॉल्स में थर्ड T20I में. एंड दैट इज द रीजन श्रीलंका लॉस्ट द सीरीज. दे स्टार्टेड वेल. देयर इज वन अनदर वन कॉमन पॉइंट कि अगर कोलैप्स आ रहा है इसका मतलब कि आपने स्टार्ट अच्छा किया था. दे स्टार्टेड रियली 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 वेल, but towards the end of the innings, the middle order, the lower middle order, they had no answers to India's questions. और कल का मैच तो it was not मोहम्मद सिराज taking wickets, it was not जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामी कहीं से आके विकेट्स ले गए. कल जिन्होंने विकेट्स ली वो थे रिंकू सिंह, जिनकी पहली दो T20I विकेट्स थी, और सूर्य कुमार यादव, जिनकी पहली दो इंटरनेशनल विकेट्स थी. सूर्य कुमार यादव तो ओडीआई T20 में बॉलिंग ही नहीं करते हैं, बहुत रेयर बॉलिंग करते हैं. ये उनका तीसरा ओवर चौथा ओवर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का. रिंकू सिंह ने भी सिर्फ एक ओडीआई विकेट ली थी इससे पहले, एंड दे केम आउट एंड Rinku and Surya both took 2 wickets in their respective overs, the second last and the last overs, and that those wickets were a part of the collapse. As you can see, 22 for 7, मतलब 22 रन पे 7 विकेटें देकर collapse होना, it tells you how big a factor that was for Sri Lanka, not just in the third T20I but all three T20Is, and that is a sign of worry. When you start good, it's a good sign, but then continuously for 3 consecutive matches you face a collapse. It tells you a lot about the middle order and the lower middle order, and Sri Lanka, as I said, they need to go back to the drawing board. They need to think कि यार कहाँ गलती हो गई है, क्यों क्यों स्टार्ट अच्छा मिलने के बाद वो कैपिटलाइज नहीं हो पा रहा है, वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है. And Sri Lanka will eventually have to work on that. It worked in the favor of India. अगर तीन में से कम दो अच्छे स्टार्ट भी कैपिटलाइज हो जाते तो इंडिया प्रॉब्लम में आ सकती थी, एंड श्रीलंका could have well won the series, but that didn't happen because they couldn't build on to the base that they had laid with a good partnership at the top. Losing quick wickets is something that happens in cricket, but it happens very rarely. You face a collapse, but वो collapse बहुत 10 मैच 15-20 मैच में एक बार आना चाहिए, एक बार ही आता है. इंडिया ने एडिलेड में 36 पे ऑल आउट हुए थे वो, लेकिन उसके बाद से इट वाज अ रेयर कोलैप्स, वो दोबारा नहीं आता. आप 3 लगातार T20I में कोलैप्स करेंगे, दैट इज अ साइन ऑफ वरी फॉर एनी टीम. तो श्रीलंका, सनत जसूरिया द कोच,
and the team management, captain, and the whole team, in fact, need to sit together and see where are things going wrong. Middle order, lower middle order, they need to put in batters who can take up the responsibility to finish the innings well, not just start, because they have good openers up at the top. They need batters to finish the inning in the middle order and towards the end of the innings. So a huge task for Sri Lanka ahead. There is a T20 World Cup 2 years down the line. 2 साल है. They need to work on this, because एक बार हो जाता है तो ठीक है, but three consecutive means that there is some cause of worry in the batting order. Well, we'll have to wait and see what the Sri Lanka does with their batting order from here on. You guys, please subscribe to the Cricketnext YouTube channel, hit the bell icon, follow us across all our social media platform. ऐसे ही और डिस्कशंस आपके लिए आती रहेंगी. आपको क्या लगता है श्रीलंका की बैटिंग पे, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. व्हाट डू यू थिंक श्रीलंका नीड्स टू डू राइट? कौन से बैटर्स ने आपको इंप्रेस किया, कौन से बैटर्स ने आपको बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया, एंड यू बिलीव दैट श्रीलंका नीड्स टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर देम? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड ऑल योर कमेंट्स, टेक ऑल योर क्वेश्चंस. अंटिल देन, प्लीज सब्सक्राइब टू द क्रिकेटनेक्स्ट यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन. ऐसी और अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी, तो एक बार वो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.